Friends, today we are going to start with company accounts, but before starting any session of Sanket sir, first we will revise our basic rules of accounts, that is traditional approach and modern approach. Traditional approach talks about personal real nominal account, debit the debtor, credit the creditor, debit the receiver, credit the giver, debtor becomes giver, creditor becomes receiver. Real account debit what comes in, credit what goes out, and nominal account debit all expenses and losses, credit all incomes and gains. In case of modern approach, asset debit balance, liability credit balance, expenses debit, income credit, capital credit balance. I hope you are doing good for company accounts. Company accounts is one of the easiest chapter. So if you understand basic concept behind it. Before starting today's session, first I will revise quickly the balance sheet pro forma in the chapter number 1. So in chapter unit number 1 of company accounts, that is the last chapter. So company accounts unit 1, it talks about balance sheet pro forma, and you are aware about balance sheet pro forma. It is equity and liability, shareholder fund, share capital, resource and surplus, non-current liability, long-term borrowing, deferred tax liability, other long-term liability, long-term provisions, current liability, short-term borrowing, trade payable, other current liability, short-term provisions. In case of assets, non-current assets, property, plant and equipment, intangible assets, capital WIP, intangible assets under development, non-current investment, deferred tax asset, long-term loans, advances, other non-current assets, current assets, CIT, CSO, current investment, inventory, trade receivable, cash and cash equivalent, short-term loans, advances, other current assets. If you can match my speed of balance sheet pro forma, तो आपको सब अच्छे से आ रहा है, ये समझ लेना. So मैं चाहता हूं कि आप सभी स्टूडेंट्स मेरे स्पीड को मैच करें while revision session, so it will boost your confidence. Okay, so match the speed of revision. बाकी इसमें तो मैं slow ही रहूंगा, so don't worry. So we have covered that the capital is divided in beta authorized capital, that is a maximum capital for which company register their shares. So remember, this is called as face value. It might be 1 rupee, 10 rupee, 5 rupees, 20 rupees, 100 rupees. Maximum capital you have to decide, because on that you have to pay ROC charges. So no one wants to pay extra charges. So I have given you the example of stamp duty in case of buying of home. So in case of that, beta ROC decides maximum limit number of shares, and that number of shares you cannot cross, and therefore your issued capital is always equal to or less than your authorized capital. It never touches above authorized capital. It's not allowed. You can change it, but by passing beta memorandum of association, you have to make some changes in capital clauses. So it's very difficult procedure. So that's why, yes, beta authorized capital thoda sa high hi rakhna, ye hamesha yaad rakho, and issued capital is less than your high authorized capital. Suppose if you don't want to increase your number of shares, you can issue shares at premium. I have given you the example how premium will decrease number of shares by having a same amount of collection of amount. So remember, collection is in the same amount, but your number of shares will get reduced. It is called as beta we are issuing shares at premium. So authorized capital के बाद आएगा issued capital के बाद आएगा subscribed capital. Remember, in case of subscribed capital, whatever number of shares you have issued to public, and suppose if shares demands your shares on the higher side, संकेत सर की popularity जो है वो आपने बढ़ा दी कि नहीं संकेत सर के कंपनी में इन्वेस्ट करो, और संकेत सर का बेटा शेयर्स जो होगा वो बहुत मार्केट में ऊपर चला जाएगा. ये याद रखना कि वो केस में संकेत सर जो है वो आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट कि आपके नंबर ऑफ शेयर्स जो रहेंगे, नंबर ऑफ शेयर्स ये ओवर सब्सक्राइब हो जाएंगे. एंड ओवर सब्सक्राइब मींस व्हाट? यू हैव डिमांडेड मोर शेयर्स एंड एसएस लिमिटेड हैज 1 lakh shares, but you demanded for 2 lakh shares. So public की डिमांड ऊपर रहेगा तो that is over subscription, and suppose public की डिमांड कम रहेगी तो that is under subscription. But in case of under subscription, rule is that you have to return the money of shareholder. Why? Because if your subscription is not 100%, in that case you will appoint underwriter. Underwriter is a person who takes responsibility to sell all these shares. He called as underwriter. And underwriter ये एक नामान बोल सके, नामांकित लोग रहते हैं जिनका बेटा हम लोग सब मतलब कोटक रहेगा या एसबीआई वाले रहेंगे, ये बहुत अच्छे नाम एचडीएफसी से ऐसे, तो ये हो सकते हैं आपके अंडरराइटर्स जो आपके शेयर्स बेच के देंगे, उसके बदले में वो कमीशन लेंगे. फ्री में कुछ नहीं होता है ये. यस, इतना याद रखिए. So authorized capital, issued capital, subscribed capital. After that, called up capital. Now, what is called up capital? Amount which is called by the company. It's not needed that your amount will be 10 rupees is a face value, and if issue price is rupees 50, you will demand whole 50 rupees in one stroke. But real life में थोड़ा अलग रहता है, पर ठीक है, सीखने के लिए in educational books, yes, we have to understand, we have to divide it in the installments, and installments is like application money, then allotment money, then first call, and then second call. So remember, application money when we received, it
is called as bank account debit. So in company angle के entries pass करनी है. So we open one temporary account which is called as equity share application account, which is in bank account debit to equity share application, and then you will pass entry equity share application to equity share capital. Application will get cancelled and bank account debit to equity share capital. ये entry आप करने वाले हो. In case of allotment of share, your entry will be equity share allotment account debit to equity share capital, and then bank account debit to equity share allotment. Allotment will get cancelled, and your entry will be bank account debit to equity share capital. So suppose if you are not received any amount of any installment, for example, if I am not receiving allotment money or first call or second call, I will open one temporary account which is a fill in the blanks होगा. Please write it in the comment section. जब आपको पैसा नहीं मिला, if I have not received the amount, what is the account to be opened? Please write it in the comment section. जल्दी से लिखिए कि कौन सा अकाउंट हम लोग ओपन करते हैं कि यदि हमें पैसा नहीं मिला तो सो आई कैन चेक योर कॉन्सेंट्रेशन. तो आंसर्स जो है ना बोलते रहो, कमेंट सेक्शन में लिखते रहो. सो जल्दी जल्दी तो आपका एक्टिवनेस बढ़ेगा. आई होप. चलो, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू. यस, मेरा इंटरनेट को क्या प्रॉब्लम आएगा? नहीं, कुछ नहीं है. चलो जल्दी जल्दी क्वेश्चंस देख लेता हूं मैं आपके, और आप सभी स्टूडेंट्स आंसर लिख रहे हो. गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू. यस बेटा, रुचिका जी, अंकिता जी, प्रमोद ने आंसर्स भेज दिए. अखिलेंदेश्वरी, अंकिता गुड मॉर्निंग. अंकिता ने तो इतनी बार मैसेज भेज दिया, सर गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग. क्या बेटा अंकिता आज बहुत ही ज्यादा खुश दिख रही है. स्वाति गिरी जी, अंकिता को अपना नाम लिखा हुआ चाहिए था क्या बेटा? तमन्ना, आदित्य दर्शन जी, यस गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू. महक जी, सर इलस्ट्रेशन 4 का कॉल सिनेरियस एक्सप्लेन कर दीजिए. महक रॉय का एक रिक्वेस्ट आया है. सर एप्लीकेशन अमाउंट विल बी पेड अप बाय अप्लाइंग इट शेयर्स. और सबसे पहले आयशा ने आंसर दे दिया, सर दिस इज कॉल सिनेरियस. एवरीवन आंसर्ड कॉल सिनेरियस. और वेरी गुड बेटा आस्था जी. यस, निर्मित ने भी आंसर दे दिया, श्रेया तिवारी ने आंसर दे दिया है. आज सभी बच्चे, सर्वेश ने आंसर दिया, निकिता, आयुषी, स्वाति, स्मृति, सब ने आंसर दिया कि सर इफ आई हैव नॉट रिसीव्ड द अमाउंट इट इज कॉल्ड एज कॉल सिनेरियस. और जो बच्चों ने अभी भी आंसर नहीं दिए हुए तो कनेक्ट हो जाइए हमारे यस एप्लीकेशन थ्रू. वैष्णवी चौधरी पूछ रही है, सर इलस्ट्रेशन 4 में कॉल सिनेरियस की एंट्री करनी पड़ेगी क्या? ओके, देखते हैं बेटा, करेंगे कॉल सिनेरियस. तमन्ना पति ने भी आंसर भेजा, प्रगति, प्रमोद के एंड वाडेकर बाबा साहेब ने भी आंसर भेजा हुआ है. सो आप सबको यस बेटा बहुत बहुत 100% आपको मैं बोलता हूं कि आपको ये चैप्टर समझ में आया है. वेरी गुड बेटा, वेरी गुड. सो यहाँ पे वी हैव कंप्लीटेड आवर बेटा टारगेट ऑफ यस अप्रोचेस. सो यहाँ पे कॉल मनी we received and call money, suppose if not received, then we open call sin arrears account. Call sin arrears always has a debit balance, and balance sheet presentation मैंने आपको बताया था कि you have to present your balance sheet notes to accounts only for the cross reference, how to open it, equity and liabilities, then you will write shareholder fund, share capital, reserves and surplus, then long term ये लिखा रह जाएगा non current liability वगैरह. And after that ways बेटा we have written notes to accounts is only for cross references. हम लोग जब क्रॉस रेफरेंस देते तो उसको बोलते हैं नोट्स टू अकाउंट्स. बहुत बढ़िया बेटा, आप सबको ये समझ में आया होगा. प्रीति द्विवेदी बोल रही है वेदर दिस इज अ फर्स्ट कॉल. पंकज मेहता जी बोल रहे हैं मेरा नाम लीजिए क्लास में. वेरी गुड. मनीषा ने भी आंसर दिया है, बहुत बढ़िया बेटा. ओके. फॉर सीए कोर्स विच लैपटॉप इज बेटर, ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं. यस बाय मस्तान जी. लैपटॉप बेटा सीए कोर्स के लिए सिंपल मोबाइल भी इट्स ओके. सो यू कैन स्टडी फ्रॉम मोबाइल. डोंट वेस्ट योर पेरेंट मनी बेटा if not necessary. Okay, so laptop and all you will get yes in articleship, so don't worry, don't waste your parents money. इतना ही मैं बोलूंगा. चलो yes, let's start with illustration number 4. Yes, everyone is ready beta.
Okay, some students are asking for illustration number 4. Illustration 4, I don't think it was difficult one. Call scenarios account has to be open in illustration number 4, and today we are going to see one very, very difficult question. So one difficult question in illustration number 7, I think. So आज हम लोग करने वाले हैं इलस्ट्रेशन नंबर 4 पे आते हैं. पंत लिमिटेड इनवाइटेड एप्लीकेशंस फॉर 50,000. यस बेटा, पंत लिमिटेड, ऋषभ पंत, 50,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ 50 ईच. एप्लीकेशन 20, अलॉटमेंट का 10 एंड फर्स्ट कॉल एंड फाइनल कॉल का 20. सो दिस इज अवर टाइम स्केल डायग्राम. The company received applications of 60,000. Oh, ho, ho, ho. So you received application of 60,000, but this is over subscription. This is called as over subscription. You can write over here. This is over subscription. Now you have two options, either pro rata. Pro rata means you will give 5 shares for 4 shares. So this is like, yes, better in proportionate shares you can give them. So this is called as pro rata. And second one, this, yes, application received for 50,000 shares and they rejected the rest. Show journal entries if company refunded the amount of applicants and allotment money was received only on 45,000. So 5,000 shares calls in arrears honge. So this is calls in arrears. This is called as call scenarios. So amount is receivable. So 5,000 shares के ऊपर कितनी amount receivable होगी? So 5,000 shares के ऊपर हमारी 10 rupees के हिसाब से 50,000 amount is receivable. Remember, our amount is receivable of rupees 50,000. कितना amount receivable होगा? 50,000 रुपया हमारा receivable होगा. It's very simple. Okay. पंकज का क्वेश्चन है, सर बुक्स में से ही प्रॉब्लम पूछे जाते हैं क्या? सो बेटा पंकज, मैं आपको यही बताऊंगा, एट फाउंडेशन लेवल your level required for accounting is basic knowledge, is not advanced knowledge. So beta, normally 90% questions are asked from study material itself, but students are better, they are finding study material very difficult. They don't want to come out from the comfort zone, and therefore they find study material as difficult as, and they solve only basic questions like 11th standard questions. And our study material, I'm telling you, the level of study material is really very high for foundation. I request you all, if you want to pass your CA foundation exam, don't refer other questions. Try to attempt only RTP questions, MTP questions, and study material questions apart from this. And please do proper revisions. Only a success mantra is only revision. No other better technique to come out from the 90 plus. I'm giving you assurance. If you read it for minimum 3 to 4 times, solid for 3 to 4 times. Concept understanding is a different thing, but writing practice is needed for solving all illustration, और writing practice बहुत जरूरी है. ठीक है, कोई बात नहीं. See, 5,000 shares into rupees 10 is our call scenarios. So how to pass entries? Beta, first entry क्या होता है? Bank account debit. Beta, I'm not going to tell you all these entries because we already covered all these entries in the yesterday session. So do some smart work. We will solve that difficult illustrations in writing instead of solving this question. These questions are really very easy. Correct hai? Okay, everyone correct hai? 2 entries, beta. Yes, Aisha ji ka question is, sir, can I pass 2 entries separately? But yes, beta, definitely. So bank account debit to equity share capital application. How many shares, beta? 60,000 ka shares you received into 20 rupees, sir. It's very simple. Then beta, equity share application, we are going to cancel it. 60,000 shares into 20. And out of that, we transferred only 50,000 shares into 20 and refunded 20 rupees into 10,000 shares. So 10,000 shares we refunded. So you can pass only one entry. A single entry में पूरा काम निपट जाएगा. So application account will get cancelled, and bank account debit to equity share capital to bank account will be the entry. So you refunded it. So you received only 10 lakhs rupees. So bank में कितना जमा दिखेगा? 10 lakhs. Now allotment account की entry होगी
We call for 50,000 shares. We call for 50,000 shares. So equity share capital, sorry, equity share allotment. Allotment से debit होएगा. Capital will get increased. So entry will be equity share allotment account debit to equity share capital. How many shares, beta? How many shares? There are 50,000 shares. So 50,000 shares multiplied by कितना रुपया है रे? 10 रुपया है. So it's very simple. 50,000 shares into 10 rupees. So this is 5 lakhs. Okay. So 50,000 shares into 10. But wait. I received shares amount of rupees 45,000 into 10. I have not received 5,000 shares into 10, and then allotment will be 50,000 into 10. So allotment account will get cancelled. So call scenarios 50,000 and received 4 lakh 50,000. Received 4 lakh 50,000. Okay. अरे इजी है क्या? So 45,000 shares into 10, 5,000 shares into 10, and refunded beta 50,000 shares into 10. Now we are going to solve what is preference shares. First, understand the concept of preference shares. Now, first, I will explain you the concept of preference shares. What is the difference between equity shares and preference shares? See, I want to play safe game. Okay, sir, safe game. Yes, sir. I am in need of capital. I am in need of 10 lakhs rupees. Now I have two different options. See, I have two different options. How I can raise this money? One option number one is that I will issue equity shares. Okay, I will issue equity shares. That is the first option to me. And second option, yes beta, I will issue debentures. So दूसरा option मेरे पास है debentures को issue करना. Now what is debentures? Debentures is nothing but it's a loan. It is a loan. Okay, so on loan I have to pay interest. So what are the terms? Try to understand these terms. Okay, share है तो dividend है. Share मतलब dividend. इसके बदले में लोग क्या मांगेंगे? Dividend. See, if I am taking 10 lakhs rupees from you, but obvious you will demand something in return. Something in return. Yes, beta. If you deposited any amount in the bank, you are taking interest. Okay. Similarly, if I'm asking you for the money, you will take interest from me. But suppose if I ask you, no, you are not beta. You are not lender. You are यहाँ पे क्या होगा? You are not lender. There is no relationship of lender and borrower in case of equity shares. In equity shares, you are not borrower-lender in relationship. You are in the relationship of ownership. You are owners of my business. कैसा भारी लगता है ना? ओनर है मैं आपके बिजनेस का. ओनर तो ओनर को क्या मिलता है? ओनर को प्रॉफिट मिलता है. पर ओनर को क्या मिलता है? ओनर को profit मिलता है. So owner gets profit, and when this profit is divided in two parts, whether one is which is distributed profit, one which is called as what profit beta we are going to distribute. See beta, see whatever earnings we have in our in our day-to-day life. Suppose if your father's earning is rupees 20,000 to 30,000. Example है, थोड़ा सा समझ लीजिए. 20,000 to 30,000. So beta, your spending will be 10,000, and you will keep some amount aside for your future purpose. Okay, so we already have savings. जो मिडिल क्लास के लोग हैं ना, तो हमारा क्या हो जाता है कि हम लोग एकदम से डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं. मिडिल क्लास के लोगों का क्या हो जाता है कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट हो जाता है. मतलब क्या होता है? सर, बिजनेस एक्सपांड करने के लिए पैसा नहीं है, आता है जाता है. हम एक्सपांशन कर ही नहीं सकते कि ये लोगों की सोच ही नहीं रहेगी. क्या सोच नहीं रहेगी? मैं को रिलेट कर रहा हूं आपके रियल लाइफ से. दो लोग हैं बेटा. आप बिफोर बिकमिंग सीए आपकी जिंदगी बहुत साधारण थी. 20 से 30 हजार रुपए आपके घर से अर्निंग था. मिडिल क्लास फैमिली, ये समझ लीजिए 30,000 रुपीज आपका स्पेंडिंग था. 30,000 रुपीज अर्निंग था. अर्निंग के सामने बेटा स्पेंडिंग भी 25,000 to 27,000 हुआ. ओके, सो यू आर before becoming CA are from middle class family. Now understand this scenario. आफ्टर बिकमिंग सीए, मैं कोई सपना नहीं बता रहा हूं आपको. आफ्टर बिकमिंग सीए आपको महीने का एज्यूम करते 70,000 80,000 रुपीज आने लगा. खर्चा उधर ही छे. खर्चा स्पेंडिंग इज देयर ओनली, बट नाउ यू हैव सम इन्वेस्टमेंट प्लान्स. इमीडिएटली यू विल टेक सम LIC, but beta you won't distribute. Now you won't spend that amount because you required it for your expansion purpose. Now correlate with this company.
Correlate that now your company is getting profit, whether company is going to distribute it immediately. No beta, company is not going to distribute it because company के कुछ सपने हैं, company wants to expand this business. तो यहाँ पे business जब तक expand नहीं करते हैं तो why we are going to distribute this profit? So it is called as reserves and surplus. It is which is not distributed is called as reserves of the company. What surplus is having for the company. So बेटा जितना reserves में balance होगा उतनी company की expansion की ताकत बढ़ जाएगी. Company can expand its business if it is not distributed. And what is distribution? Distribution is called as dividend. Distribution is called as dividend. It's very simple. You can correlate with your real life example. सो पैसा उड़ाना है या रखना है, कमेंट सेक्शन में बताइए. यस, ओके. सो पैसा उड़ाना है क्या डिस्ट्रीब्यूट करना है या नॉट डिस्ट्रीब्यूट या एक्सपांड करना है बिजनेस, आपकी क्या सोच है? राइट इट इन द कमेंट सेक्शन. व्हाट इज योर थिंकिंग बेटा, whether you want to whether you will pay dividend or whether you will keep it in the reserves and surplus. Write it in the comment section. सो बेटा यहाँ पे आंसर्स आए हैं. सर महिमा जैन बोल रही है सर रखना है पैसा. तन्मित कौर जी बता रही है सर पैसा रखना चाहिए. वेरी गुड बेटा. सो यूर थिंकिंग इज लाइक बिजनेसमैन, यू वांट टू एक्सपांड दिस बिजनेस. यस, डोंट डिस्ट्रीब्यूट इट, डोंट डिस्ट्रीब्यूट इट. सो वी वांट रिजर्व्स एंड सरप्लस. आशुतोष पानी जी जो है ये अकेले इंसान ने लिखा हुआ है सर डिविडेंड. तो ठीक है, अपनी अपनी राय है. कोई लोग होंगे शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर्स. शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर्स, यस आई विल टेक मनी एंड आई विल गो आउट फ्रॉम दिस कंपनी, बस कम पैसा कमाओ. तो दिस इज अ शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर. लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर, नाउ सी द डिफरेंस. यस बेटा, थिंकिंग दोनों भी करेक्ट है. जब मैं शेयर मार्केट में बहुत सारा इन्वेस्ट करता था, आजकल क्या होता है, आई एम नॉट गेटिंग अ टाइम फॉर दिस शेयर मार्केट, पर जब मैं बहुत सारा इन्वेस्ट करता था, सो देयर इज अ थिंकिंग डिफरेंस बिटवीन मी एंड माय डैड. माय डैड ऑलवेज बेटा, ही ऑलवेज ट्राइड टू कीप ऑल स्टॉक्स फॉर लॉन्ग टर्म एंड माय थिंकिंग सर पापा पैसा निकल गया चलो बाहर निकल जाओ. सो ये दोनों के थिंकिंग का डिफरेंस है. सो इट्स ओके इफ यू हैव शॉर्ट टर्म पॉलिसी टेक डिविडेंड, इट्स ऑल्सो करेक्ट. सम पीपल थिंक नहीं पर मेरे पापा का ही बेटा हमेशा जीत होता था, लॉन्ग टर्म में पैसा अच्छा ही मिलता है. फिर मुझे लगता था यार मेरे में पेशेंस ही नहीं है, क्यों मैंने रखा नहीं ये शेयर. तो ये जो चीज होता है ना लॉन्ग टर्म के नेचर से बहुत बढ़िया रहता है. बट ये हम लोग छोटी छोटी चीजें अभी नहीं सीखेंगे इन्वेस्टर का एंगल से. देयर इज अ सब्जेक्ट विच इज कॉल्ड एज अ फाइनेंशियल मैनेजमेंट इन इंटर. सो वी विल सी in that subject. So now today you have to only focus. So what is distributable and what is not distributable? So write down it in the comment section. Every one of you write down distribution means dividend and not distribution means reserves and surplus. लिखोगे तो सीखोगे. तो लिखो comment section में लिखो. So जल्दी से लिखो distribution means dividend. If you write it then you will retain it. Okay, writing means retention. Writing means retention. यस बेटा. महक रॉय जी लिख रही है मम्मी के लिए कुछ बहुत कुछ करना है. बहुत बढ़िया बेटा. डिस्ट्रीब्यूशन मीन्स डिविडेंड एंड नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड मीन्स रिजर्व्स एंड सरप्लस. राइट डाउन, राइट डाउन, राइट डाउन. पॉसिबल होंगे तो हमारे सभी सेशंस आप लाइव सेशंस में अटेंड करो. मैं इतना ही चाहता हूं कि हमारे आईसीआई के साथ ज्यादा से ज्यादा बच्चे जुड़े रहे और आप लोग स्टडी मटेरियल की ही भाषा सीखते रहे. ओके, सो थोड़ा डिफिकल्ट जाएगा, टाइमिंग रहेगा, थोड़ा कम टाइमिंग रहेगा, पर शॉर्ट में पढ़ोगे तो अच्छा पढ़ोगे. ओके, ये शेयर करते रहिए अपने आईसीआई के लेक्चर्स बहुत सारे स्टूडेंट्स तक ताकि सबका फायदा हो. और ये फायदा इसलिए जरूरी है कि जितने स्टूडेंट्स है वो स्टडी मटेरियल को स्टिक रहे. ओके, चलिए. सो डिस्ट्रीब्यूशन इज डिविडेंड बहुत सारे बच्चों ने लिखा है. नरेंद्र ने लिखा, देवेंद्र ने लिखा, महक ने लिखा, निकिता ने लिखा है, मनीष ने लिखा है, वाडेकर बाबा साहेब, वेरी गुड. सिंधु, जो नए नए नाम आते रहते हैं ना बेटा बहुत अच्छा लगता है कहां कहां से आप लोग जुड़ते हो. तो यस, सो 10 lakhs rupees ओनर्स और बोरोस. हाँ 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 हाँ. नाउ सी नाउ हु इज लेंडर
He is not interested, beta. He is not interested in profit. He is not interested in profit. Understand? He is least bother whether your company is profit or loss. Okay, अभी देखो, अभी मेरे साथ जो लोग जुड़ते हैं तो दो टाइप के लोग होते हैं। एक मेरे को बहुत मेहनत करके देते हैं कि नहीं भाई, कि सर के साथ है, हम लोगों को भी मेहनत करनी है और अपना भविष्य सुकर बनाना है। तो ये जो प्रॉफिट और लॉस में वो लोग इंटरेस्ट, उनको पता है कि सर बेटा टेंशन में नहीं है, कहाँ पे कंपनी का क्या होने वाला है, सब पता रहता है। सो अकॉर्डिंगली दे विल हेल्प मी। तो इतना याद रखें। बट देर आर सम पीपल इन माई ऑर्गेनाइजेशन हु वर्क्स ओनली फॉर, बेटा 11 से 11 बजे तक, 11 बजे वो उठेगा, घड़ी देखेगा, निकल जाएगा। और कुछ लोग ऐसे भी रहेंगे कि 10 बजे का बेटा ड्यूटी टाइमिंग होगा, 6 बजे चलो निकल जाओ, अपना अपना टाइमिंग देखो, निकलो। तो वो लोग होते डिबेंचर्स। वो लोग होते डिबेंचर्स। दे आर लीस्ट बॉदर अबाउट वेदर योर कंपनी इज इन प्रॉफिट और लॉस। दे आर ओनली इंटरेस्टेड इन टेकिंग इंटरेस्ट। ओके, इंटरेस्टेड इन ओनली टेकिंग इंटरेस्ट। सर व्हाट इज द डेफिनेशन? इंटरेस्टेड मतलब उनको इतना इंटरेस्ट है कि मुझे ब्याज मिलता रहे, बस। They want only interest. Whether your company is in profit or whether your company is in loss, they are least bother for all these things, and therefore it is called as debentures. So they will get beta fixed amount. Okay, so इनके सुख दुख में हम लोग कभी नहीं जाएंगे। उनको उनकी सैलरी दे दो, खत्म हो गया। और वही जो हमें साथ देते हैं, तो जब हमारे अच्छे दिन आएंगे तो हम लोग उनको प्रॉफिट भी देंगे, प्रॉफिट में से शेयर करेंगे। तो ये याद रखो, ये दोनों का डिफरेंस है। When you are owner, so you will get profits, or profits in long run it is always higher. But debenture holders, they are not interested in profits and all. They are interested only in beta interest amount, व्याज में interest है. So they will get fixed return. So tell me, whose returns are variable and whose returns are fixed? जल्दी से comment section में लिखिए, whose returns are variable and whose returns are fixed. No problem, beta. Manisha ji, it's okay. Yes, whose returns are variable, बेटा? Whose returns are variable? जल्दी से बताइए मुझे कमेंट सेक्शन में, वेरिएबल रिटर्न्स किसके हैं और फिक्स रिटर्न किसके हैं। आप आंसर दोगे ना बेटा, मेरा एनर्जी लेवल और अलग लेवल पे चला जाएगा। सो एवरी वन ऑफ यू प्लीज आंसर इट, प्लीज 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 प्लीज, रिक्वेस्ट, जल्दी जल्दी लिखो। So now I am going to check one more question, that is preferential capital. चलो जल्दी से आंसर आ गए हैं। सर शेयर्स वाले वेरिएबल, वेरी गुड बेटा, वेरिएबल प्रॉफिट होगा तो ही पैसा मिलेगा। डिबेंचर्स वाले फिक्स, शेयर होल्डर इज वेरिएबल, डिबेंचर्स आर फिक्स, डिबेंचर्स आर गेट फिक्स रिटर्न। प्रमोद बोल रहा है फिक्स रिटर्न, यस यस यस। सो डिबेंचर्स आर गेटिंग फिक्स इंटरेस्ट। Now what about the preferential capital? सर जल्दी से मुझे बताइए प्रेफरेंस शेयर कैपिटल के बारे में। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल क्या होता है बेटा? प्रेफरेंस शेयर कैपिटल ना होता है फिक्स, ये इसमें दोनों कंपोनेंट्स है। यहाँ पे फिक्स्ड कंपोनेंट है एंड यहाँ पे पैसा तब देना है व्हेन यू आर इन प्रॉफिट। सो दिस इज अ हाइब्रिड इंस्ट्रूमेंट। इट इज हाइब्रिड इंस्ट्रूमेंट। इट हैज two qualities, sir, two qualities. One is of debenture and one is of profit, beta. So this is a hybrid instrument. दोनों के, इसमें दोनों के महत्व है, इसमें दोनों की कैरेक्टरिस्टिक्स है। ये दोनों को इंक्लूड करता है। वन, फिक्स रेट, एंड सेकंड दे आर गेटिंग डिविडेंड ओनली इफ देयर इज अ प्रॉफिट। ओके सर, फिक्स कंपोनेंट डिबेंचर्स का, एंड प्रॉफिट मिला तो होगा इक्विटी का, पर क्या मिलेगा इनको? फिक्स। सो हाउ टू राइट दिस? नॉर्मली इट इज रिटर्न 5000 प्रेफरेंस शेयर्स। सो दिस इज नंबर 5000 प्रेफरेंस शेयर्स, 9%, दैट इज प्रेफरेंस डिविडेंड रेट। इसको कैसे लिखा जाता है? 5000 डिविडेंड रेट इज 9%, यस, ऑफ रुपीज 100 ईच। प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ रुपीज 100 ईच। तो 100 ईच इज अ फेस वैल्यू। तो 5000 और उसके ऊपर 2 जीरो चिपका दिए तो 5 लाख रुपीज हो गया। सर 5 लाख रुपीज इज कॉल्ड एज प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। इसको हम लोग बोलेंगे प्रेफरेंस शेयर कैपिटल सर। ओके, वेरी गुड। किशन शाह अभी ज्वाइन हुए, गुड आफ्टरनून लिख रहे हैं, नो प्रॉब्लम। चलो, सो प्रेफरेंशियल होल्डर्स को क्या मिलता है बेटा? हाँ, नाउ इन केस ऑफ वाइंडिंग ऑफ कंपनी, जब कंपनी बंद होगी और एनी प्रॉफिट, सो प्रेफरेंस नाम में छुपा हुआ है, इफ
प्रॉफिट आया तो पहले किसका हक होगा? हु इज गेटिंग अ फर्स्ट प्रायोरिटी? सो प्रेफरेंस शेयर होल्डर, इसी के लिए तो नाम है ना प्रेफरेंस, प्रेफरेंस, प्रेफरेंस। वी विल गेट फर्स्ट प्रायोरिटी टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स एंड सेकंड प्रायोरिटी टू इक्विटी शेयर होल्डर्स। ओके, सेकंड प्रायोरिटी टू इक्विटी शेयर होल्डर्स। सो यू आर गेटिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ what is the difference between preference share capital, what is the difference between equity share capital. So whenever you earn profit, priority to preference shareholder first and then equity shareholders. So this is very basic concept, preference shareholders, equity shareholders, and what is debentures. Okay, so jaldi se comment section mein bataiye ki what you are getting the yes, how preference shareholders or debentures and equity shares are different from each other. जो भी समझा है वो comment section में लिखिए. Whatever you understood, write it in the comment section. So I will read your answers. So जो भी आपको समझा है, अदरवाइज आई विल रेक्टिफाई यू. चलो राइट डाउन इन कमेंट सेक्शन, जल्दी से लिखो. प्रेफरेंस शेयर होल्डर विल गेट प्रायोरिटी. सी, सबसे पहले पेमेंट किसका होता है? डिवेंचर होल्डर, बिकॉज दे आर आउटसाइडर्स. They are outsiders. See, they are not concerned about the company. They are not shareholders. They are outsiders. So it is long-term borrowings. तो वो कहाँ पे रिकॉर्ड करते हैं हम लोग? Long-term borrowing. Okay. And then our shareholders are divided in two parts. One is preference shareholders and second one is equity shareholders. So preference shareholder will get the priority over equity shareholder. Preference shareholder को जल्दी से प्रायोरिटी मिलेगा equity shareholder के पहले, पर preference dividend भी उनको फिक्स मिलेगा, पर equity shareholders का यस बेटा तजुर्बा अच्छा है, they will get dividend फ्लक्चुएटिंग में. ओके, वेरिएबल, जितना प्रॉफिट ज्यादा होगा उनको डिविडेंड उस तरीके से या उनके परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट भी बढ़ते जाएंगे. तो प्रॉफिट ज्यादा तो उनका अर्निंग ज्यादा. पर डिवेंचर वाले और प्रेफरेंस शेयर वाले वो बेटा फिक्स पे जाते हैं. और कंपनी डिवेंचर्स के बदले में प्रेफरेंस शेयर्स क्यों इशू करती है? क्योंकि एक उसमें रहता है ना कि भाई प्रॉफिट हुआ तो डिविडेंड देंगे, इसलिए कंपनी उसको इशू करती है. अदरवाइज कंपनी को ऐसा प्रेफरेंस शेयर्स इशू करने की कुछ भी ऐसे जरूरत नहीं है. पर इतना याद रखो, डिवेंचर का इंटरेस्ट रेट कम रहेगा बिकॉज रिस्क इज लेस. डिवेंचर होल्डर्स विल गेट फिक्स अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट, सो देयर इज रिस्क इज लेस, सो दे विल गेट लेस इंटरेस्ट. प्रेफरेंस शेयर होल्डर को थोड़ा ज्यादा डिविडेंड रेट मिलेगा. इक्विटी शेयर होल्डर वो तो माशाअल्लाह है बेटा, वो तो बहुत कमाने वाले लोग हैं, तो इक्विटी शेयर होल्डर को सबसे ज्यादा मिलता है बिकॉज दे आर ओनर्स ऑफ द बिजनेस. यस, वेरी गुड, वेरी गुड. आदित्य दर्शन जी, थोड़ा सा गलत बोला आपने. प्रेफरेंस शेयर होल्डर को इंटरेस्ट नहीं मिलता है, फिक्स डिविडेंड मिलता है. इंटरेस्ट ये वर्ड यूज ही नहीं करने का प्रेफरेंस शेयर होल्डर को. एंड इक्विटी शेयर होल्डर को पैसा रहेगा तो बाद में मिलेगा. ओके, प्रेफरेंस डिविडेंड देने के बाद. आदित्य दर्शन जी, चेंज योर आंसर. और महक बोल रहे हैं प्रॉफिट में सेकंड प्रायोरिटी इक्विटी शेयर कैपिटल को होती है. यस, आशुतोष पानी, इक्विटी शेयर होल्डर has the variable dividend and they are real owners of the company. The preference shareholders have fixed return. नेटवर्क इशू तो नहीं आ रहा है ना बेटा? यस, नेटवर्क इशू नहीं है ना? चलो जल्दी से आ जाओ. इलस्ट्रेशन नंबर 5 पे आ जाते हैं. अभी इक्विटी शेयर होल्डर्स एंड प्रेफरेंस होल्डर्स, यू गॉट द कॉन्सेप्ट. वेरी सिंपल क्वेश्चन, यू कैन डू बाय योर ओन. नाउ दे आस्क यू टू प्रिपेयर कैश बुक. यार कैश बुक ये नया क्वेश्चन पूछ लिया. एंड जर्नल एंट्रीज. जर्नल एंट्रीज मतलब यहाँ पे कौन से ट्रांजैक्शन जाएंगे? ड्यू ट्रांजैक्शंस. ड्यू ट्रांजैक्शंस ऑल अंडर बेटा यू कैन बाइफरकेट. जर्नल एंट्रीज में कौन से ट्रांजैक्शन जाएंगे? ड्यू ट्रांजैक्शन. ड्यू वाला equity share application to equity share capital, equity share allotment to equity share capital, first call account debit to equity share capital and second call account debit to equity share capital. ये सभी क्या एंट्रीज है? ड्यू के एंट्रीज है. एंड व्हाट अबाउट कैश बुक? कैश बुक में हम लोग रिसीट पेमेंट रिकॉर्ड करते हैं. क्या रिकॉर्ड करते हैं? रिसीट. सो रिसीट्स ऑलरेडी वी रिकॉर्डेड इन द कैश बुक. ओके, रिसीट मींस व्हाट? बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर सेकंड कॉल, एंड सिमिलर फॉर प्रेफरेंस शेयर. सो रिसीट्स सभी कैश बुक में रिकॉर्ड होगी, रिसीट सभी कैश बुक में रिकॉर्ड होगी, ड्यू एंट्रीज सभी आपके रिकॉर्ड होंगे. किस में रिकॉर्ड होंगे? ड्यू एंट्रीज इन दी बुक्स ऑफ कंपनी में, जर्नल प्रॉपर में. जर्नल प्रॉपर में हम लोग ड्यू एंट्रीज रिकॉर्ड करेंगे. बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया. यस, पूरा समझ में आया? ड्यू एंट्रीज किस में रिकॉर्ड होंगी? चलो जल्दी से लिखो. ड्यू एंट्रीज, ड्यू एंट्रीज किस में रिकॉर्ड होगी? वेरी गुड. घर वालों को डिविडेंड मतलब बाहर वालों को इंटरेस्ट मिलता है. सर्वेश, वेरी गुड बेटा. सर्वेश, इंटरेस्ट का स्पेलिंग बराबर लिखना बेटा. INTE, TRE नहीं होता है. मैं भी लिखता था 11-12 में गलत. सो मुझे मेरे 11-12 के डेज याद आए. इंटरेस्ट का स्पेलिंग होता है INTEREST, इंटरेस्ट है, याद रखना.
स्पेलिंग मिस्टेक मत करना इंटरेस्ट का। बहुत से स्टूडेंट को आदत होती है इंटरेस्ट, हम लोग बोलने में ऐसा करते हैं ना इंटरेस्ट, तो TRE लिखते हैं, TEREST है। Okay, due entries in the journal proper and your receipts entry in the cash book. So ये देखो due entries सभी journal proper में due entries equity share application, equity share allotment to equity share capital, preference share application, preference share allotment to preference share capital. Due entries सभी इसमें ही रहेंगी। Equity share first call to equity share capital, preference share first call to preference share capital, first call preference share capital, सभी due entries इसमें, और आप लोग इधर received की entries इसमें करोगे। So ये मैं क्वेश्चन करूं या आप लोग खुद से कर लोगे? Write in the comment section, should I take this question or you will do by your own? It's very simple. Receipts, all receipt entries on the debit side you have to pass, and due journal entries, whatever due transaction entries you have to pass in the journal proper. तो आप लोग खुद से करोगे or should I take this question? Yes, whether you will do by your own or should I take? Write down. Preference shareholders will have different account, same entry as equity share account. Yes, beta, same. See, preference share instead of equity share, you will call it as preference share. Entries are same, sab kuch same. Only the word is different. That instead of equity, you are going to use preference. Yes, we will do. Sir, Pramod is saying, sir, will do this. Take which are confusing problems. Yes, beta, definitely. कंफ्यूजन वाले प्रॉब्लम तो मैं ही लूंगा ना। सर राइट साइड में क्या लिखना है? बाय बैलेंस कैरिड डाउन सर। ये लास्ट लाइन पे लिखना है, ऊपर लिखा है, ये थोड़ा लास्ट लाइन पे लिखो, यहाँ पे बाय बैलेंस कैरिड डाउन, ये नीचे स्टार मार्क लेके ऐसा लिखने का। ओके बेटा, ओवर ओवर ओवर। शेयर्स इशूड एट डिस्काउंट। यस बेटा, जर्नल प्रॉपर बोल सकते हो या ओनली जर्नल इज ऑल्सो करेक्ट? सर, if face value you decided ₹10, but you should share at ₹9, it's not allowed. पहले एक्ट में अलाउड था, जब मैं सीखता था ना, कंपनीज एक्ट 1956 एप्लीकेबल था, और मैं सीए होने के बाद कंपनीज एक्ट 2013 आया। ओके, तो मेरे टाइम पे, एट माय टाइम, देयर वाज शेयर कैन बी इशूड एट डिस्काउंट, बट बेटा नए जनरेशन में लॉ चेंज्ड एंड शेयर्स आर नॉट अलाउड टू इशू एट डिस्काउंट। ये याद रखो, शेयर्स अलाउड नहीं है डिस्काउंट पे इशू करने के लिए, इतना याद रखिए। सो एज पर कंपनीज एक्ट 2013, शेयर्स आर नॉट अलाउड टू इशू एट डिस्काउंट, ये याद रखना। ओके, अंडरस्टूड? शेयर्स इशूड एट डिस्काउंट। Now what about shares issued at premium? चलो ध्यान देके सुनना, shares issued at premium, ये तो कल ही एक्सप्लेन किया था सर, ये तो पहले कल ही एक्सप्लेन किया था। सो व्हाट इज द, यस, नाउ यू ओनली टेल मी इट इन द कमेंट सेक्शन, व्हाट विल बी द फेस वैल्यू एंड व्हाट विल बी द इशू प्राइस? व्हाट विल बी द फेस वैल्यू एंड व्हाट विल बी द इशू प्राइस? टेल मी इट इन द कमेंट सेक्शन। यस, sweat equity shares can be issued at discount. So Mastan ji, what is sweat equity shares? Sweat equity shares for our employees we are giving share. बेटा sweat मतलब पसीना, और जो पसीना निकालने वाला अपना एम्प्लॉय है बेचारे को, तो आपको उसके लिए कुछ तो करना चाहिए, तो उसके लिए आपने इक्विटी शेयर्स इशू किए हैं, तो वो आप डिस्काउंट पे दे सकते हो। यू कैन इशू इट एट डिस्काउंट। सो स्वेट मतलब पसीना, और पसीना निकालने वाला कौन? तो बेचारा अपना एम्प्लॉय, और एम्प्लॉय को हम लोग हमारा ओनर भी बना सकते हैं, उसको दे देंगे शेयर्स, और वो भी डिस्काउंट पे। ओके, ठीक है। सो व्हाट इज द शेयर्स इशूड एट प्रीमियम? चलो जल्दी से। यस, इफ फेस वैल्यू इज ₹10, एंड हर्षिता ने आंसर दिया इफ द वैल्यू इज ₹12, सो इशू प्राइस इज 12। Very good, beta. When issue price is more than the face value, we write it as security premium, not reserves, beta. Security premium, बस SPR करके मत लिखना. We write it in the reserves and surplus, but only write as security premium. Don't write security premium reserve. ऐसा नहीं होता है.
Very good, very good. Everyone answered it. Now बेटा आउट ऑफ 12 इक्विटी शेयर कैपिटल में जाएंगी फेस वैल्यू एंड सिक्योरिटी प्रीमियम जाएगा एक्सेस, ये रिजर्व्स एंड सरप्लस में। ये किधर जाएगा? यू विल रिकॉर्ड इट अंडर शेयर कैपिटल। टू डिफरेंट बेटा टू डिफरेंट फ्लैट नंबर्स। ओके, सो टू डिफरेंट फ्लैट नंबर्स। एक ही इसमें जाएगा वन फ्लोर दैट इज अ शेयर होल्डर फंड बट हैविंग डिफरेंट डिफरेंट। बेटा कैसे याद रखने का बैलेंस शीट? हैविंग वन फ्लोर बट डिफरेंट फ्लैट नंबर्स। नॉन करंट लाइबिलिटी वन फ्लोर इन विच यू हैव लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, देयरफॉर टैक्स लाइबिलिटी, अदर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी एंड लॉन्ग टर्म प्रोविजंस। तो अलग अलग ये रहेगा, होम एक ही रहेगा पर अलग अलग नाम रहेंगे। Sir, this is 4 marks question. Sir, security premium, see, security premium has credit balance. You can write over there. Security premium has credit balance. Better reserves and surplus. Now on the liability side, you are writing this. So this is shareholders fund. Shareholders are, yes, for you, better, they are creditors. You have to pay them back. So security premium is a part of reserves and surplus, and ultimately reserves and surplus is a part of shareholders fund. So shareholder को वापस पैसा देना पड़ेगा. So it's your liability to pay them, and therefore it has a credit balance. It's very simple. It has a credit balance, sir. But when security premium is debited, utilize means what? Used by the company means debit कब देना है? When to give debit? 4 marks का question है, या इसे आपको पूछ सकती है 4 marks के लिए कि सिक्योरिटी प्रीमियम को यूज कब करना है। सिक्योरिटी प्रीमियम को यूज कब करना है? सबसे पहले सिक्योरिटी प्रीमियम ये बोनस शेयर्स देने के लिए यूज होते हैं। मतलब क्या? तो आप लोग एंट्री कर सकते हो सिक्योरिटी प्रीमियम को डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। मतलब क्या? मैंने बेटा एक शेयर के बदले में लोगों को एक शेयर एक्स्ट्रा दिया। इंस्टेड ऑफ दैट बोनस शेयर्स वी हैव चैप्टर एट फाउंडेशन, बाद इंटर लेवल पे हम लोग इसको पढ़ने वाले। तो सिक्योरिटी प्रीमियम को डेबिट देके इक्विटी शेयर कैपिटल को क्रेडिट करना, ये इसको बोलते हैं बेटा, क्या बोलते हैं? बोनस सिक्योरिटी। ओके, अभी प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, राइट ऑफ प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस। सो सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट to preliminary expenses. Security premium account debit to preliminary expenses. सिक्योरिटी प्रीमियम को डेबिट होएगा, प्रिलिमिनरी एक्सपेंस को क्रेडिट होगा। नाउ व्हाट इज प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस? प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस मींस कंपनी फॉर्मेशन एक्सपेंसेस। प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस इज कंपनी फॉर्मेशन एक्सपेंसेस। बट बेटा इफ यू आर अप्लाइंग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, तो ये सिक्योरिटी प्रीमियम को डेबिट देना अलाउड नहीं है, हम लोग इसको P&L में डालते हैं। बट इफ यू आर नॉट अप्लाइंग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, देन बेटा यू कैन राइट डाउन इन दिस वे सिक्योरिटी प्रीमियम टू प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस। बट एवरी कंपनी इन इंडिया इज अप्लाइंग, बेटा एवरी चार्टर्ड अकाउंटेंट ये तो अप्लाई करता ही है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। तो आप रियल लाइफ में जब जाओगे तो P&L में ही ट्रांसफर करना है। रियल लाइफ में इट्स इन P&L, बट इन बुकिश लैंग्वेज इट माइट बी सिक्योरिटी प्रीमियम डेबिटेड, बट इन रियल लाइफ कंपल्सरी P&L एक्सपेंसेस। नीचे नोट भी लिखा हुआ है कि सिक्योरिटी प्रीमियम can't apply if you are B and D में हम लोग उसको अप्लाई नहीं करते हैं। So now we can't apply it for beta B and D part. So it's only as per company's back, but as per accounting standard, it is not allowed. See, accounting standards are different and Company Act is different. Company Act is issued by Ministry of Company Affairs and accounting standards are issued by ICAI. So there beta yes, दो अलग अलग लोग हैं, तो दो अलग अलग लोगों का कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है। हाथ में एक ही हाथ में लेके चलना चाहिए, पर हो सकता है दोनों के विचार अलग अलग होंगे, तो ये हो सकता है। तो इसीलिए आईसीआई का और हमारे कंपनी एक्ट का कभी कभी विचार मिलते नहीं है, और जब नहीं मिलते हैं सोच, तो हम लोगों को किसका सुनना है? तो बेटा हमारे डियर आईसीआई का ही हम लोग सुनने वाले हैं। ओके, चलो, तो ये हो गया दूसरा यूज। नेक्स्ट वन टू राइट ऑफ एक्सपेंसेस, कमीशन पेड और डिस्काउंट अलाउड ऑन एनी ऑफ द सिक्योरिटी और डिबेंचर्स। तो बेटा ये भी एक है कि सपोज इफ एनी डिबेंचर इज इशूड एट डिस्काउंट, तो इट्स अ लॉस, एंड शेयर्स आर इशूड एट प्रीमियम, तो वो डिस्काउंट और डिस्काउंट किधर जाएगा? डिस्काउंट जाएगा बेटा रिजर्व्स एंड सरप्लस में ही। तो आप उसको सिक्योरिटी प्रीमियम, फॉर एग्जांपल सिक्योरिटी प्रीमियम में 100 रुपीज बैलेंस है,
एंड इन डिस्काउंट 80 रुपीज बैलेंस है, तो यू कैन सेट ऑफ विथ ईच अदर एंड 20 रुपीज बैलेंस लिखो, क्रेडिट में सिक्योरिटी प्रीमियम इज मोर, तो उसको आप लोग सिक्योरिटी प्रीमियम में डाल दो। ओके, सो सिक्योरिटी प्रीमियम के साथ एडजस्ट कर सकते हो। टू प्रोवाइड प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। नाउ व्हाट इज प्रीमियम ऑन रिडम्पशन? रिडम्पशन मींस वापस देना, टू गिव बैक, to give back. For example, if I collected from you 1 लाख रुपी, कितना अमाउंट कलेक्ट किया मैंने? 1 लाख रुपी मैंने आपसे कलेक्ट किया, बट इन रिटर्न आई एम गिविंग यू 1,10,000। मैंने आपको रिटर्न में कितना रुपया दिया? एक्स्ट्रा 10,000। सो दैट एक्स्ट्रा 10,000 इज कॉल्ड एज प्रीमियम ऑन रिडम्पशन। और जब ये प्रीमियम ऑन रिडम्पशन होता है तो वो किसके साथ एडजस्ट कर सकते हो? तो एक्स्ट्रा, दिस इज माई लॉस ना बेटा, दिस इज माई लॉस ऑफ 10,000, यू कैन सेट ऑफ विथ, बेटा किसके साथ सेट ऑफ कर सकते हो? विथ दिस सिक्योरिटी प्रीमियम। बट बेटा एज पर कंपनीज एक्ट इट इज अलाउड, बट एज पर, यस बेटा, एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इज नॉट अलाउड। तो एक्स्ट्रा ये लॉस हम लोग पी एंड एल में से यूज कर सकते हैं। तो किसको डेबिट दे सकते हैं? पी एंड एल को डेबिट दे सकते हैं एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, बट कंपनी एक्ट बोलती है कि सिक्योरिटी प्रीमियम को आप डेबिट दे सकते हो सर। तो पर हम लोग जब 11-12 के सॉरी हम लोग जब इंटर के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ना, तो इंटर में रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंसेस, तो हम लोग पी एंड एल को ही डेबिट देने वाले। किसको डेबिट देने वाले? पी एंड एल। एंड ओन शेयर्स को वापस लेना, अभी ओन शेयर्स के टाइम पे सिक्योरिटी प्रीमियम यूज कर सकते हो। बायबैक जिसको बोलते हैं कि मैं बायबैक इसको क्या बोलते हैं बेटा? बायबैक। और जब हम लोग एक्स्ट्रा पैसा देते हैं बायबैक के टाइम पे, फॉर एग्जांपल 1 लाख शेयर के बदले में 2 लाख रुपया देते, तो उस एक्स्ट्रा 1 लाख जो मेरा लॉस हुआ, तो आप किसके साथ एडजस्ट कर सकते हो? सिक्योरिटी प्रीमियम के साथ। मतलब उसको पी एंड एल में नहीं डालना रहे, यू डोंट रिकॉर्ड इट इन पी एंड एल, यू रिकॉर्ड इट अगेंस्ट सिक्योरिटी प्रीमियम। वो आप किसके साथ रिकॉर्ड कर सकते हो? ये 5 केसेस में आप इंस्टेड ऑफ गिविंग पी एंड एल को डेबिट, यू कैन गिव दिस लॉसेस किसको डेबिट? सिक्योरिटी प्रीमियम को डेबिट दे सकते हो, ऐसा उन्होंने बोला हुआ है। बोनस शेयर्स, सो राइट डाउन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, बोनस शेयर्स, देन प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, then commission or discount on issue of debentures. Fourth one is beta redemption of premium on redemption of preference shares, and fifth one is beta in case of buyback. Any question that you are not getting any concept? इसका मतलब क्या? use means security premium को डेबिट देना। Yes, anything which is not yet clear, जो अभी भी क्लियर नहीं है, ऐसे कुछ चीजें मुझे बताइए बताइए बताइए। मैं चाहता हूं कि आप सभी स्टूडेंट, मुझे कुछ भी कॉन्सेप्ट नहीं समझा तो पूछ सकते हो कि सर इसका मतलब क्या? एक बार हिंदी में आसान भाषा में बताता हूं। देखो बेटा, नॉर्मली सिक्योरिटी प्रीमियम को क्रेडिट बैलेंस होता है, बिकॉज एक्स्ट्रा पैसा हमने कलेक्ट किया। एक्स्ट्रा पैसा कलेक्ट करना इज अ सिक्योरिटी प्रीमियम। अभी ये सिक्योरिटी प्रीमियम हमारा ऐसा क्रेडिट साइड पे बैठा रहेगा, स्पेसिफिक रिजोर्ट, अरे इसको कुछ तो यूज होगा ना, सिर्फ ऐसा। इसको डिविडेंड के लिए तो यूज नहीं कर सकते। किसके लिए यूज नहीं कर सकते? डिविडेंड के लिए। डिविडेंड के लिए नहीं यूज कर सकते मतलब क्या सर? मतलब क्या? ये बैलेंस शीट है ना, ये बैलेंस शीट, इधर ऐसा रिजर्व एंड सरप्लस दिखेगा, ये सिक्योरिटी प्रीमियम 10,000 रुपीज दिख रहा है, एंड यूर पी एंड एल अकाउंट 5,000 रुपया दिख रहा है। अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट। अभी डिविडेंड, इसके ऊपर किसकी नजर पड़ेगी? इसके दोनों के ऊपर शेयर होल्डर बोलेगा, ये शेयर होल्डर ऐसा देखेगा, कितना है बाबा सिक्योरिटी प्रीमियम? सिक्योरिटी प्रीमियम 10,000 रुपया है, पी एंड एल में कितना रुपया है? 5,000 रुपया है। अभी इक्विटी शेयर होल्डर ने ऐसा पैसा देखा, तो इक्विटी शेयर होल्डर बोलेगा पैसा दो, प्रॉफिट दो, प्रॉफिट दो। तो हम लोग क्या बोलेंगे? भाई इसको तो तू हाथ ही नहीं लगा सकता, इधर तो देख ही मत, इधर तो देख ही मत। तू सिक्योरिटी प्रीमियम को तू देख नहीं सकता, किसको देख सकता है? पी एंड एल को देख, उसमें से मैं डिविडेंड दे सकता हूं। तो फिर ये सिक्योरिटी प्रीमियम सालों के साल वैसा ही दिखेगा क्या? तो ये सिक्योरिटी प्रीमियम का यूज क्या होगा? तो ये सिक्योरिटी प्रीमियम के 5 यूजेस है कि ये कब कम हो सकता है। तो सबसे पहले यदि हमने ये यहां से ट्रांसफर करके बोनस शेयर्स में ऐड किया, मतलब इधर से मैं माइनस करेगा कि इक्विटी शेयर कैपिटल में ऐड करेगा, तो इतना सिंपल है। तो सिक्योरिटी प्रीमियम का पहला यूज क्या होगा? बोनस शेयर्स। बोनस शेयर्स देना, ये पहला यूज। दूसरा, कंपनी फॉर्मेशन के कुछ खर्चे किए रहेंगे, आरओसी के खर्चे किए होंगे, तो वो आरओसी के खर्चे मतलब प्रिलिमिनरी एक्सपेंस है, और ये सिक्योरिटी प्रीमियम आपने कलेक्ट करके रखा रहेगा, तो उसके साथ आप क्या कर सकते हो? प्रिलिमिनरी एक्सपेंस, मतलब ये पी एंड एल में डालने से अच्छा पी एंड एल चा डेबिटला प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस नहीं लिखना है, उसके बदले में आप किसको डेबिट दे दोगे? सिक्योरिटी प्रीमियम को डेबिट दे दोगे। सर ये भी अलाउड है? अलाउड था जब आप अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो है ना वो फॉलो नहीं करते रहेंगे। ऐसी कंपनीज के लिए जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो करता है, बेटा ये नहीं, ये यूज नहीं करने का, ये सिक्योरिटी प्रीमियम को यूज नहीं करने का, कंपलसरी प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस पी एंड एल में डालने का, ये उसने बोल दिया। तीसरा यूज कहां पे? तीसरा यूज जो है वो बेटा हमने क्या किया, ये डिबेंचर्स है ना, डिबेंचर्स उसको इशू किया। डिबेंचर्स है ना, 1 लाख के डिबेंचर्स थे, उसके 1 लाख के बदले में हमने 95,000 ही यूज किया, 98,000 में इशू किए। कितने में इशू किए सर? 98,000। सर लॉस हुआ ना 2,000 का, अभी लॉस हुआ तो वो डिस्काउंट बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं? डिस्काउंट। तो डिस्काउंट कितना हुआ? 2,000। तो ये डिस्काउंट को आप लोग इधर से माइनस, ये लॉस को माइनस कर दोगे सिक्योरिटी प्रीमियम के साथ। हाँ वो अलाउड है, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स, तो दूसरे सिक्योरिटी का ये अलाउड है। चौथा, अभी सब प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स थे ना, प्रेफरेंस शेयर होल्डर, उनसे मैंने 1 लाख रुपया लिया था, 1 लाख रुपया
दिया था और उनको 1,15,000 रुपया वापस देना है, मतलब 15,000 रुपया मुझे एक्सेस देना है, ये भी मेरा लॉस हुआ। तो सर पहले जो है ना वो P&L में से यूज नहीं करते थे, सिक्योरिटी प्रीमियम को यूज कर सकते थे, पर यदि आप अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो करते हो तो आपको ये यूज करने का हक नहीं है। ये 15,000 रुपया जो है ना आप P&L को ही यूज करोगे, इतना याद रखिए, कंपलसरी। पर इसमें कंपनी एक्ट फॉलो करने वाले, मतलब जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स फॉलो नहीं करते, उनके लिए ये 15,000 रुपया यूज करने का। तो इससे तो कंपनी सभी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो करती है। हम लोग चार्टर्ड अकाउंटेंट है, हम लोग तो बोलते हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के बिना हम लोग अकाउंटिंग नहीं देखेंगे। तो कंपनी तो हमारी अकाउंटिंग एक्चुअल कॉन्सेप्ट ऑफ अकाउंटिंग और कंपलसरी फॉलो करती है। सो ये जो है ना ये P&L को ही डेबिट देते, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंसेस। पर आपको एग्जाम के लिए 1 मार्क के लिए लिख के रखना पड़ेगा कि प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंसेस के लिए वो करना है। और तीसरा पांचवा कौन सा, बायबैक के टाइम पे। बायबैक मतलब क्या, इक्विटी शेयर्स। प्रीमियम प्रेफरेंस शेयर्स के लिए वर्ड यूज होता है, प्रेफरेंस शेयर्स के लिए, प्रेफरेंस शेयर्स के लिए वर्ड यूज होता है रिडम्पशन। प्रेफरेंस शेयर्स के लिए वर्ड यूज होता है रिडम्पशन। इक्विटी शेयर्स के लिए वर्ड यूज होता है बायबैक। बायबैक ये वर्ड्स याद रखो, बायबैक ये वर्ड किसके लिए यूज होता है, इक्विटी शेयर्स के लिए। और प्रेफरेंस शेयर्स के लिए क्या वर्ड यूज होता है, रिडम्पशन। रिडम्पशन रिडम्पशन रिडम्पशन। रिडम्पशन मतलब वापस लेना, वापस पैसा देना। 1,00,000 शेयर सर्टिफिकेट वापस लेने के और उनके बदले में वापस रिपेमेंट कर देंगे। भाई लोग है प्रेफरेंस होल्डर, उनसे पैसा लिया था आपने, अभी देने का टाइम आया, ओके लोन देते हो ना आप लोग, वैसा प्रेफरेंस होल्डर को भी पैसा वापस मिल जाएगा, जिसको बोलते हैं रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंसेस। आई होप यू आर एंजॉइंग दिस सेशन। व्हाट इज सिक्योरिटी प्रीमियम का यूज है ये आपको समझ में आया होगा। 4 मार्क के लिए क्वेश्चन आता है। एवरी वन ऑफ यू now understood it? Yes beta, tell me it in the comment section. Now you are getting this concept or not? सिक्योरिटी प्रीमियम को यूज करना मींस डेबिट देना। कितना बोलवाते हो रहे आप मेरे से 1 घंटे में? यस यस, परफेक्टली अंडरस्टूड, परफेक्टली अंडरस्टूड। वाह वाह वाह, वेरी गुड। चलो, शेयर्स इशूड एट प्रीमियम, 1 क्वेश्चन वी आर गोइंग टू सॉल्व। उसके बाद मैं लूंगा बहुत बढ़िया क्वेश्चन आफ्टर द ब्रेक, दैट इज क्वेश्चन नंबर 7, जिसके लिए पूरा पूरा इंडिया रुका हुआ रहता है। 7 नंबर क्वेश्चन बहुत बढ़िया तरीके से देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 7। उसके पहले बिफोर ब्रेक वी आर गोइंग टू सॉल्व 1 क्वेश्चन विच इज कॉल्ड एज क्वेश्चन नंबर 6। सो इलस्ट्रेशन नंबर 6 पे हम लोग जाते हैं, जल्दी से लिख लेना। इलस्ट्रेशन नंबर 6 इज वेरी सिंपल। ऑन 1st of October 2020 पावर इक्विपमेंट पायनियर इक्विपमेंट लिमिटेड रिसीव्ड, क्या है पायनियर लिक्विड, ये रिसीव्ड 2,50,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹100 ईच। कितने शेयर्स होते हैं, 2,50,000 शेयर्स ऑफ ₹100 ईच। बेटा आशुतोष थोड़ा 5-10 मिनट तो बोलने के लिए, बेटा सुबह 5 बजे से सेशन चालू है, प्लीज थोड़ा रुकना पड़ेगा, 12 बजे ब्रेक लेने वाला हूं। ओके, रिडीमेबल का बेटा मीनिंग बता दिया ना रे। रिडीमेबल, रिडीम मतलब वापस देना। तमन्ना जी, वापस देने को बोलते रिडीम। रिडीम, रिडीम मतलब वापस देना, कि आपसे मैंने 10 लाख रुपया लिया है प्रेफरेंस शेयर कैपिटल के माध्यम से, आपको मैं वापस वो पैसा रिटर्न करूंगा, उसको बोलते रिडीमेबल। यस, 2,50,000 shares to be issued at premium of ₹25. 100 rupees is a face value and redeemable is security premium is 25. तो इश्यू प्राइस कितनी है, इश्यू प्राइस है 125। इश्यू प्राइस है 125। इश्यू प्राइस है 125 रुपया। Okay, now how to collect this 125? Diagram, see, try to understand the diagram. 25 फेस वैल्यू। नाउ अलॉटमेंट इंक्लूडिंग प्रीमियम, प्रीमियम कितना है 25, तो फेस वैल्यू कितना होगा 50। सो 50 इज अ फेस वैल्यू एंड सिक्योरिटी प्रीमियम इज 25। वेरी गुड। एंड बैलेंस अमाउंट मनी, बैलेंस कितना चाहिए 75, तो ये हो जाएगा 25। ओके, 25 50 25 ये हो जाएगा आपका पूरा का पूरा फेस वैल्यू। फेस वैल्यू 100 rupees and excess amount is in security premium. And when you collect that amount, now see, this is given in the question when you collected that extra amount, so you collected it in the allotment. देखो ये दिया होगा क्वेश्चन में कि आपने सिक्योरिटी प्रीमियम को रिकॉर्ड कब करना है। सो रिकॉर्ड कब करना है, तो यहाँ पे अलॉटमेंट में रिकॉर्ड करना है। कहां पे रिकॉर्ड करना है, सिक्योरिटी प्रीमियम
अरे सिक्योरिटी प्रीमियम भी कलेक्ट किया ना, तो वो कहां पे रिकॉर्ड करेगा? वो रिकॉर्ड करेगा अलॉटमेंट में। इजी छे, इजी छे, एकदम इजी। ओके, सो थिंक फॉर वन शेयर बेटा, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन 25-25, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन टू इक्विटी शेयर कैपिटल 25-25, 25-25 over. This is the first entry. Second entry, equity share allotment account debit. Wait. Equity share allotment 75. Allotment is always including premium. But capital is always at face value. Face value is 50 in allotment. And two security premium 25. Think always for one share. If you want to develop your accounting, always think for company accounts. May always think for one share. Always think for one share. It is a bit of mantra of company accounts. And equity share allotment 75 to equity share capital 50 to security premium 25. Now next entry will be bank account debit 75 to equity share allotment 75. Allotment cancel. Allotment cancelled. Very easy. Third entry, equity share first call 25 to equity share capital 25. Easy. And bank account debit to equity share first call 25-25. Ekdam easy. And now ICE has not asked you last entry. इसका पूछा ही नहीं है, तो कहां तक पूछा है? पूछा है आपको only and only 2,50,000. मल्टीप्लाइड बाय 250. ICI ने लास्ट के 3 zeros इधर देखो, रुपीज इन 1000 लिए है. सो इंटू 250, 2,50,000 के लास्ट 3 zeros उड़ा देंगे. सी द एंट्रीज. 25 into 250 कितना आवश्य? 25 into 250, you will get 6250. Yes, correct. Equity share application 6250 to equity share capital. Correct. Equity share allotment देखो कितना है? 75. 75 into 250. 18,750. Then 50 is equal to 50 into 250 and 25 into 250. Yes, I'm getting all these entries. Any difficulty beta in these entries? Tell me fast. जल्दी से बोलो. Any difficulty? So. Tell me one fill in the blank करना. Before break, take one fill in the blank. Yes. Yes, beta, here no preference shares are given. So tell me one thing. Yes, fill in the blank. Allotment will be recorded at number 1 at face value plus security premium, and none of above. So fill in the blank. Allotment amount will be recorded at. Allotment amount कौन से प्राइस पे रिकॉर्ड होएगा? जल्दी बताओ. Allotment amount really recorded at. Allotment account will be recorded at. महिमा जैन बोल रही है फेस वैल्यू. बाकी के स्टूडेंट्स क्या बोल रहे देखते हैं. Allotment account is recorded at. Allotment. महिमा ने लिखा है फेस वैल्यू. आई डोंट नो अदर आंसर्स. बेटा सब स्टूडेंट्स ने लिखा. महिमा क्या कर रही है बेटा? महिमा अभी तो बताया ना मैंने, अलॉटमेंट 75 पे रिकॉर्ड करना है, कैपिटल 50 पे रिकॉर्ड होगा. क्या कर रही है बेटा महिमा? फेस वैल्यू प्लस सिक्योरिटी प्रीमियम. ऑप्शन टू. अरे बहुत सारे स्टूडेंट ने ऑप्शन 2 ही लिखा. टू. अंकित मिश्रा ने 2-4 बार लिख दिया टू. ओके, सो अलॉटमेंट में नहीं रिकॉर्ड होगा ना सिक्योरिटी प्रीमियम ना नन. सो करेक्ट आंसर इज फेस वैल्यू प्लस सिक्योरिटी प्रीमियम. कैपिटल होता तो फेस वैल्यू.
कैपिटल होता तो फेस वैल्यू। क्लियर विद दिस कॉन्सेप्ट बेटा, एकदम क्लियर छे। सो वी विल टेक अ ब्रेक। ब्रेक के बाद बहुत बढ़िया क्वेश्चन, प्लीज फ्रेश होके आना, मुझे फुल एनर्जी चाहिए ब्रेक के बाद, बिकॉज क्वेश्चन इज डिफिकल्ट। 7 नंबर का क्वेश्चन है और वो आपके दिमाग में मैं डालना चाहता हूं, तो ब्रेक के बाद मुझे आपकी फुल एनर्जी चाहिए। थैंक यू।
Welcome back once again for this ICI classes accounting. We are completing last part of this illustration number 6, that is security premium if shares are issued at security premium. And every one of you have written this security premium plus face value. We write it in the allotment. So we write it in the allotment, beta. Security premium plus face value. एक minute. क्या हो गया? हाँ, चलिए आ जाइए अभी. आपके क्वेश्चंस कुछ है क्या, देखता हूं. यस, मनीषा जी, चलो शुरू करते हैं अपना सेशन. इलस्ट्रेशन नंबर 7, very important question. Mark it as A++ category question. A++ category question. Okay. See, JHP Limited is a company with authorized capital of rupees 10 lakhs. कितना कैपिटल है बेटा? 10 लाख का कैपिटल है, 10 lakhs. One share is of rupees face value rupees 10 per share. Six lakhs equity shares have been issued. So this is a maximum limit. Maximum limit. 6 lakh shares had been issued. The company proposes to make a further issue of 1 lakh shares. 1 लाख शेयर से 10 शेयर में 14 per share. 14 rupees per share. The arrangement for being made is as under. Two, 3, 2. Sorry. See the, yes, can you draw this line? 2 per share on application. Allotment पे 5. 5 will divide it in 2 parts, 1 and 4, because 4 is a security premium. And final call is 7 rupees. Final call is 7 rupees. है. So 1, 2 rupees, 1, 4 and 7. Applicants for 5,000 shares received allotment in full. So 5,000 shares को पूरे 5,000 shares दिए जाएंगे. So just for your knowledge, application received, and don't write anything, and allotment of shares. Don't write it. So just understand it. What is the diagram first? Diagram is very simple. Application 2, allotment 1 and 4, and 7 is final call. Application, allotment, first call. Okay. So see, now next one, lot 1, 5,000 shares, and you received and you allotted all shares 5,000. How many shares you have? You have maximum 1 lakh shares. But see, application received कितना आएगा? Lot 2, so 5,000 को 5,000 दिया. Lot 2, 30,000 shares received. 1 share for every 2 shares. 30,000 shares received, 1 share for 2 shares,
and no money was returned to these applicants, the surplus on application being used to reduce the amount due on allotment. So कितना received हुआ? 30,000 shares. And one share will get to whom 2 shares are applied. तो जिन्होंने 2 shares apply किए थे उनको 1 share दिया गया pro rata. 15,000 shares we have given. Number 3. Applications of 3,20,000 shares received on allotment of 1 share for every 4 shares. तो जिन्होंने 4 शेयर्स अप्लाई किए थे उनको 1 शेयर दिया गया. 3,20,000 and 80,000. 3,20,000 and 80,000. So 3,55,000. So remaining and the excess being returned. Excess कितना हुआ फिर? Lot number 4. नहीं, 355. Lot 4 आएगा ही नहीं. And 1 lakh shares. 355 को 1 lakh shares दिए. You are required to record these transactions, including cash transactions, in the journal entry. Very simple. Now let's understand this application received and allotment of shares. कितने shares apply किए और कितने allot किए? Let's understand. देखो बेटा, I need complete understanding from your side. Till now, any difficulty? I have noted all these points, how application is received and diagram I have written. So any difficulty till now? Yes, tell me it in comment section. कोई भी difficulty है क्या अभी तक? Any difficulty till now? We have to pass journal entries. So for that, we will prepare one table and I need your cooperation. Then you can take screenshot afterwards. या आप लोग लिख भी सकते हो, मेरे साथ ही लिखो. चलो, every one of you. No difficulty till now? Sir, देखो, सेकंड एंड थर्ड पॉइंट निकिता, बेटा निकिता देख, 30,000 शेयर्स थे, हमें मिले. एक शेयर दिया हमने, 2 शेयर्स जिन्होंने अप्लाई किए. तो 2 शेयर्स जिसने अप्लाई किया उसको 1 शेयर दिया. तो जिन्होंने 30,000 शेयर्स अप्लाई किए उनको हाफ दिए, 15,000. इतना सिंपल है. एंड 3,20,000 शेयर्स, 1 शेयर फॉर एवरी 4 शेयर्स. तो बेटा जिन्होंने 1 शेयर अप्लाई किया, 1 शेयर दिया, जिन्होंने 4 मांगे थे, तो बेटा 320 मांगे, तो 80,000 शेयर्स. तो कौन सी बड़ी बात है बेटा निकिता? इंप्रूव करना पड़ेगा ना थोड़ा सा थिंकिंग लेवल. ओके, इसको प्रोराटा बोलते हैं. बेटा इधर क्या दिया है? शेयर्स आर इशूड एट प्रीमियम 14 रुपीज इशू प्राइस, 10 रुपीज फेस वैल्यू, तो 4 रुपीज सिक्योरिटी प्रीमियम. एंड अलॉटमेंट इंक्लूडिंग प्रीमियम, तो 5 रुपीज को मैंने डिवाइड किया. दिस इज सिक्योरिटी प्रीमियम एंड दिस इज फेस वैल्यू. वहां से मुझे समझा एनालिटिकल टेबल बनाना ही पड़ेगा बेटा. ओके, चलो, सो राइट डाउन नाउ. Write down. थोड़ी लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग इंप्रूव करो. यू आर डूइंग सीए कोर्स, यू आर नॉट डूइंग एनी बीकॉम कोर्स. तो भी आई एम ट्राइंग माई बेस्ट टू एक्सप्लेन यू ईच एंड एवरी कॉन्सेप्ट. बट स्टिल इफ यू आर नॉट गेटिंग इट, आई हैव सीन दोज स्टूडेंट्स हु आर फ्रॉम ऑल ओवर इंडिया. बेटा हमारे एग्जाम्पल में पार्थ शाह, मैं ऑलवेज एग्जाम्पल देता हूं आपको, हु स्कोर्ड आवर आईसीआई क्लासेस अटेंड करके ही 99 मार्क्स इन कॉस्टिंग. और हमारी बैचेस क्या इतनी सारी हुई नहीं है. आईसीआई के साथ हम लोग पिछले, बेटा कोरोना से आईसीआई इतना इंप्रूव कर रही है खुद को. तो आप लोग भी समझ लो, वी आर गिविंग अवर 100%. तो आप क्यों नहीं दे सकते हो?
क्या पैसा दिया तो ही 100% देना है, ऐसा कुछ लिखा हुआ है क्या हमने? वी आर गेटिंग मनी फ्रॉम दिस, बट बेटा you are getting free of cost all these classes. Why you are getting free of cost? Because ICA also wants to improve your knowledge ना. ICA भी ऐसी फैकल्टीज को सिलेक्ट करता है ना कि जो लोग अच्छा अच्छा आंसर्स, आपके क्वेश्चन आंसर सॉल्व करेंगे, आपको एक्सप्लेन करेंगे। सब बोर्ड ऑफ स्टडीज की फैकल्टीज ये देखती रहती है कि कौन फैकल्टी अच्छा डिलीवरी दे रहा है। तो आप लोग सिंपल सिंपल चीजें क्यों नहीं समझ लेते हो? अभी इसमें कौन सी बड़ी बात है बेटा नहीं समझने जैसी? चलो, राइट डाउन calculation, every one of you write down calculation for adjustment or refund. Write down calculation for adjustment or refund. Serial number, particulars, lot 1, lot 2, lot 3, total. Serial number, particulars, lot 1, lot 2, lot 3, total. Number 1, application received. Application received. 5,000 shares. Yes, beta, we already written 5,000, 30,000. Beta, in numbers, beta, in numbers. And 3,20,000. 3,55,000. Allotment of shares. चलो बोलो allotment of shares. कितने शेयर्स अलॉट किए हमने? इन कमेंट सेक्शन बेटा। Allotment of shares 5,000, 15,000 and 80,000. So total is 1 lakh. Total is 1 lakh. Yes. Allotment total is 1 lakh. Now, application money. See, beta, now we will calculate what is the application money received in rupees. Application money received in rupees. So tell me, this is rupees 2. एक शेयर का 2 रुपया आएगा ना बेटा? 2 रुपया. So number of shares received, application received, मतलब Roman 1 into Roman 2 into rupees 2. Roman 1 into rupees 2. So tell me the answer. कितना application money received हुआ? चलो फटाफट फटाफट. You have to answer. All of you have to answer. चलो, only write amounts. Don't write L, lot 1, lot 2, lot 3. Only write amounts. चलो, so कितना application money received हुआ? Yes, 10,000, 60,000, 6,40,000 and 7,10,000. 7,10,000.
Roman 4. So this is the application. Now what is number 5, beta? Excess money. Excess money. ऐसा एक आया है। निसर्ग जी, इंटरनेट इश्यू आ रहा है। हाँ, क्यों प्रॉब्लम हो रहा है आज? इंटरनेट का मतलब कनेक्टिविटी का प्रॉब्लम है क्या आज? मतलब ओके, सी, यस, वापस से देखो। जितने भी स्टूडेंट्स हैं एक बार वापस समझ लो। एप्लीकेशन रिसीव्ड, अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स, एप्लीकेशन मनी ड्यू, एप्लीकेशन मनी ड्यू आएगा। देखो, पहले एप्लीकेशन कितने रिसीव्ड हुए थे? 5,000 शेयर्स, एंड आई कलेक्टेड ₹2 फ्रॉम ईच। 30,000 shares, I collected ₹2. 3,20,000, I collected ₹2. So 3,55,000 into 2 is called as 7,10,000. Then allotment of shares, 5,000 into 2, 15,000 into 2, 80,000 into 2, and 1 lakh into 2. Okay. ठीक है, पॉइंट नंबर 4 आई एक्सप्लेन यू ऑलरेडी। तो बेटा अभी क्लियर हो गया क्या सबको? यस, नाउ एवरीथिंग इज क्लियर। चलो जल्दी से बताओ, वीडियो इज लैगिंग बोल रहे थे, अभी अच्छे से समझ में आया क्या? जल्दी से बताओ। सो एक्सेस मनी कितना आएगा? एक्सेस मनी कितना आएगा? राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन। कितना एक्सेस मनी हमने कलेक्ट किया रे? कितना एक्सेस मनी कलेक्ट किया? जल्दी बताओ, एक्सेस मनी कितना कलेक्ट किया हमने? एक्सेस मनी कितना कलेक्ट किया? जीरो, 30, 480 and 5,10,000. Okay. 0, 30, 480 and 5,10,000. We collected excess money. Correct? Hai? Now, after this, what we are going to do? We are going to ask for allotment money. Allotment money due. Now, what is the allotment money due? Allotment is of ₹5. Allotment ₹5. So Roman 2 is number of shares that we have given. Allotment of shares. And एक share का ₹5 we are going to ask them. We are going to ask them ₹5. Allotment money due.
अलॉटमेंट मनी ड्यू कितना आया बेटा, चलो जल्दी से बताओ मुझे। यस, तो सबने बता दिया अलॉटमेंट मनी। ये मुझे नहीं पता क्या हो रहा है मेरे इधर से भी। एक सेकंड, अलॉटमेंट मनी ड्यू 50,000, 3 lakhs, सॉरी सॉरी सॉरी, रोमन 2 है ना। 25,000, 75,000, 80,000 इंटू 3, 80,000 into 5, 4 lakhs. So I collected extra 5 lakhs. Roman 5, 4 lakhs rupees. And total 5 lakhs. Roman 7. Roman 7. 5 lakhs rupees I have collected. Excess money. And then allotment money due 25,000, 75,000, 4 lakhs and 5 lakhs. Then first call money due. First call money due. Roman 1. Roman 1. सॉरी यार यार क्या कर रहा हूं मैं, सॉरी सॉरी बेटा। यस, फर्स्ट कॉल मनी ड्यू नहीं होगा, पहले अलॉटमेंट मनी ड्यू होगा। नाउ रेड पेन से लिखो, बाय रेड पेन राइट डाउन, बाय रेड पेन, एडजस्टमेंट in allotment. See, we have already 30,000 rupees extra. We have 30,000 rupees extra. Excess money 5 or 6, whichever is lower. 5 or 6, whichever is lower. So we have 0 excess money. So we do not adjust anything. We have 30,000 excess money. So we adjusted 30,000. Then we have 4,80,000 excess money, but we just have to adjust 4 lakhs. So I will adjust only 4 lakhs, and 4,30,000 is my total adjustment. Total adjustment of 4,30,000. Understood the concept? देखो मेरे पास एक्स्ट्रा पैसा पड़ा हुआ है उनका, बराबर है। कितना एक्स्ट्रा पैसा पड़ा हुआ है? 30,000 रुपया एक्स्ट्रा है लॉट 2 में, और मुझे कितने पैसों की जरूरत है? 75,000। तो 75,000 मतलब 30,000 एडजस्ट होगा ना सर? मेरा आपके पास ऑलरेडी 30,000 है, और मुझे आपसे 75,000, आपका 30,000 मुझे ऑलरेडी मिल चुका है, और मुझे आपसे 75,000 लाने वाला हूं। तो मैं एक्स्ट्रा कितना कलेक्ट करूंगा? एक्स्ट्रा 45,000 कलेक्ट करूंगा। 30,000 आई विल एडजस्ट, सिंपल। एडजस्टमेंट इन अलॉटमेंट, रोमन 7। रोमन 8. रोमन 8. First call money. First call money due. Roman 2. Sorry, first call नहीं रे, अभी भी नहीं first call. Sorry. Allotment money received. Next chart is allotment money received. अभी कितना received होगा? कितना received होगा? So here I want 25,000. Here I want 45,000. And here is very simple. Roman 6 minus Roman 7. Allotment money received. Roman 6 minus Roman 7. Correct है? So 25,000 and 45,000. And this is my amount is 70,000. Roman 9. Excess money हो गया. Then excess money refund.
एक्सेस मनी रिफंड. सो एक्सेस मनी रिफंड कैसे होगा? यस, टेल मी एक्सेस मनी रिफंड. 5 5 -7. 5 -7 0. 30,000 minus 30,000 0, and 4,80,000 minus 4,80,000. So excess money refund is 80,000. 5 minus 7. And 6 minus 7 is equal to allotment money received. So 5 minus 7, excess money refund. Remember. Easy है. And 10, final call due. Final call due. Final call due कितना? Roman 2 into ₹7. ₹7 into final call. 35,000, 1,05,000, and 80,000 into 7. It's 5,60,000. So total amount is 7 lakhs. See the format. Format is very important. चलो जल्दी से बताओ. इंटरनेट कनेक्टिविटी आ गया क्या सबका? Yes. Understand the concept. See beta, application received is easy. Allotment of shares is easy. Application money received easy. Application money due easy. Excess money easy. Allotment money due easy. So up to 6 easy. But beta, from 7, now your actual journey starts. See, I want 25,000. I want 25,000. And I do not have any excess money. So I won't adjust anything. 0 is adjusted. I want 75,000. And I already have 30,000. So first I will adjust this 30,000 and call for remaining amount, that is 25,000 and 45,000. I want 4 lakhs. I already have 4,80,000. So I will adjust 4 lakhs, and I do not want to ask for any amount because I already have 80,000 extra, which I will give for refund. It's very simple. Excess money and allotment money due, you will adjust with each other. Then remaining balance you will receive, and extra balance, excess balance you will refund. तो देखो, excess money को और allotment money due को हमें adjust करना है, allotment money received करना है, और उसके बाद excess money को due refund करना है, और फिर final call आएगा. It's very simple. Now you focus only on total column. कौन से कॉलम पे फोकस करेंगे? अभी टोटल कॉलम पे फोकस करेंगे. ओके, सो लो, तो फर्स्ट एंट्री नाउ यू कैन चेक एंट्रीज. सी, अभी एंट्रीज आप लोग समझ लो. एंट्रीज समझ लो. बैंक अकाउंट डेबिट here. This is a entry number 1. You can write down on by pencil. Entry 1. Bank account debit to equity share application 7,10,000. I received 7,10,000. First entry over. Second entry. Equity share application account debit 7,10,000 to equity share capital. Now this is entry number 2. To equity share capital 2 lakhs. Then you adjusted in allotment. How much you adjusted? Entry number 2. And refunded entry number 2. So beta, equity share allotment due. This is adjustment. And this is refund. Due, adjustment, and refund.
and this is refund. Easy? Yes, beta, second entry easy. Now, equity share allotment due. This is entry number 3. But 5 lakhs will be divided in two parts, 1 rupee share capital and 4 lakhs rupees security premium. 5 lakhs, 1 lakh, 4 lakhs. To equity share capital, to security premium. Then beta, next entry, bank account debit to equity share allotment. What is the entry? Bank account debit to equity share allotment. कितने की entry होगी? 70,000. Bank account debit to equity share allotment 70,000. Correct है? So bank account debit to equity share allotment 70,000, 70,000. So what is the entry number 4? Allotment money received. Entry number 4. And then entry number 5, equity share first and final call account debit to equity share capital. And 6 number, bank account debit to final call. I hope you are clear with all these entries. Watch this session once again. Yes, beta. रिफंड करना है 80,000 हम लोग फर्स्ट कॉल के अगेंस्ट नहीं एडजस्ट करेंगे. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट. वी आर नॉट गोइंग टू एडजस्ट इट विथ फाइनल कॉल. रिफंड बोला है क्वेश्चन में, इट इज गिवन एक्सेस मनी and excess money is refund. Excess money is refund. Don't adjust with first call. So very good question from Aisha. Sir, can we adjust with final call? If it is given specifically, then okay. But not given, then you cannot adjust it. Beta, 3 times practice you need. Minimum 3 times. आज solve करना time लगा के all this question, 7 number question, minimum 3 times. Minimum 3 times. Those who want to clear. ओके अच्छा, समझा या नहीं समझा? चलो जल्दी से बताओ. एंट्री नंबर लिख लो फटाफट. एंट्री 1, देन एंट्री 2 में एप्लीकेशन मनी ड्यू मींस बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन इज द फर्स्ट एंट्री. इक्विटी शेयर एप्लीकेशन 2 lakhs, sorry 7,10,000 to equity share capital 2 lakhs to equity share allotment adjustment and to refund. Beta, to refund is 80,000. Then equity share allotment account debit to equity share capital to security premium, entry number 3. Then bank account debit to equity share allotment. Then 5th entry. मनीष जैन, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन जो है ना बेटा, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन 7,10,000 आया. देख 7,10,000 में से तूने ये इक्विटी शेयर एप्लीकेशन है बराबर है, उसमें से तूने इक्विटी शेयर कैपिटल में कितना डाला? 2 लाख. एडजस्ट कितना किया? एडजस्ट किया तूने 4,30,000. और रिफंड कितना मारा तूने? रिफंड 80,000. देख यही एंट्री है. तो इक्विटी शेयर एप्लीकेशन टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू एडजस्टमेंट मतलब टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट एंड रिफंड इज 80,000. इट्स वेरी सिंपल. यस, मिनिमम 5% एप्लीकेशन में आना चाहिए, उतना आ गया है. ₹10 का 5% बोले तो बेटा 0.5 रुपीज. तो वैष्णवी उतना पैसा आया हुआ है. वैष्णवी उतना पैसा आया हुआ है. डिफिकल्ट क्वेश्चन था बट आई ट्राइड माय बेस्ट टू मेक इट इजी. हम लोगों ने इसको इजी कर दिया है. सी नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज कॉल्स इन एरियर्स एंड कॉल्स इन एडवांस. ओके, सो अंडर कॉल्स इन एरियर्स मैक्सिमम टाइम नीडेड फॉर दिस क्वेश्चन बेटा 10 मिनट्स. 10 मिनट में कंप्लीट करो. श्रेया 10 मिनट में कंप्लीट करो. 10 से 12 मिनट. एक्चुअली दिस क्वेश्चन 10 मार्क्स का है तो 18 मिनट्स यू विल गेट, बट आफ्टर अंडरस्टैंडिंग दिस कॉन्सेप्ट यू कैन सेव योर टाइम. 10 से 12 मिनट में कंप्लीट करो. 10 to 12 मिनट्स.
due call up to receipt. You have not received the amount. It is called as calls in arrears. And calls in advance means you received first amount, but yet call is not due. Call अभी तक मांगा ही नहीं है. Call is not due. You have not called for this first call or second call, but still shareholder paid you in advance. एडवांस में दे दिया भाई, वो बैंकॉक जा रहा है या सपोज उसको जाना है आउटसाइड इंडिया, तो उसने क्या किया, वो बोला भाई मैं भूल जाऊंगा, इससे अच्छा एडवांस लेके जाओ. आप एमएससीबी का बिल कभी कभी एडवांस में पे कर देते हो, या कभी कभी पिछला बिल बाकी होता है 2 महीने का, तो बेटा वो फिर कट करने के लिए आते हैं. आपका लाइट बिल, एमएससीबी मतलब यहाँ पे महाराष्ट्र है, इलेक्ट्रिसिटी स्टेट बोर्ड, तो आपके इधर आपकी स्टेट के हिसाब से होगा. सो हियर व्हेन इलेक्ट्रिसिटी बिल इज पेंडिंग, इट इज बेटर arrears, and when you paid it in advance, it is called as beta calls in advance. So calls in advance is your liability because shareholder paid you it in advance and shareholder has not yet paid, therefore it is calls in arrears. Remember, so calls in arrears is asset. So receive हुआ तो बैंक अकाउंट को डेबिट होगा, नहीं रिसीव हुआ तो कॉल्स इन एरियर्स को डेबिट होगा, एडवांस में मिला तो बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल्स इन एडवांस क्रेडिट. सो याद रखो, कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट डेबिट टू रिस्पेक्टिव कॉल. सो हम लोग जब पैसा मिलता है तो एंट्री क्या करते हैं, बैंक टू रिस्पेक्टिव कॉल. इधर क्या करेंगे बेटा, कॉल्स इन एरियर्स टू रिस्पेक्टिव कॉल, और इधर क्या एंट्री करेंगे, कॉल मांगा ही नहीं है ना, कॉल इज नॉट येट रिसीव्ड, सो बैंक अकाउंट डेबिट टू कॉल्स इन एडवांस. बैंक अकाउंट डेबिट टू कॉल्स इन एडवांस. over. So see illustration number 8. Tomorrow I am going to finish with the concept of beta shares forfeited. Very, very important concept. Tomorrow we are going to see that concept. So tomorrow I will need, कल lecture है क्या नहीं? Tomorrow we have session. Friday को नहीं है ना शायद. Line. एक. Okay. So Shreyas Limited did not receive first call of ₹3 per share. 10,000 shares into ₹3. So calls in arrears is open. First call is not received. So calls in arrears, it's my asset. To equity share first call, we cancelled it. On 1st July, open calls in arrears account. So how to open beta calls in arrears account? Debit plus, credit minus. So to first call. And when you received it, it's a beta cancellation of first call against calls in arrears. So equity share first call account cancel हो जाएगा. आपने पहले एंट्री क्या किया था? Equity share final call account debit to equity share capital. But now that account is getting cancelled. समझ में आया? So asset याद रखो and cancel किया. और buy bank कितना आएगा बेटा? 10,000 shares into 3, 30,000. 30. Bank to calls in arrears. Very simple question. Okay. Interest on calls in arrears. See, calls in arrears is asset.
कॉल सिनेरियस ये क्या है? एसेट है, राइट डाउन, एसेट, कॉल सिनेरियस एसेट। देयरफॉर इंटरेस्ट इज माय इनकम। सो एसेट पे हमें इनकम होता है, सो दिस इंटरेस्ट इज माय इनकम। इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर्स पे इंटरेस्ट, इनकम। एंड कॉल्स इन एडवांस इज माय लाइबिलिटी, तो इंटरेस्ट इज माय एक्सपेंडिचर। इंटरेस्ट इज माय एक्सपेंडिचर। इंटरेस्ट रेट 10%, इधर 12%। 10% is interest rate, and here rate is 12%. इनकम का परसेंटेज कम है, 10% पर एनम, एंड दिस इज 12% पर एनम इंटरेस्ट रेट। इंटरेस्ट रेट मेरा 10% एंड 12% रहेगा, इतना याद रखिए। सिंपल है? यस। व्हाट इज द एंट्री? Entries, try to understand entries logically. Try to understand entries logically. इंटरेस्ट कॉल्स इन एरियर्स पे, चलो जल्दी से लिख दो सब लोग कमेंट सेक्शन में। इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर्स इज इनकम, एंड इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर्स इज कॉल्स इन एडवांस इज एक्सपेंस। बेटा यू विल चार्ज इंटरेस्ट ना, आपने पैसा नहीं दिया तो सामने वाले को इंटरेस्ट देना पड़ेगा। ओके, इन केस ऑफ एडवांस, एंड इन केस ऑफ बेटा इंटरेस्ट कॉल्स इन एरियर्स होगा तो आपका इनकम हो जाएगा, क्योंकि वो शेयर होल्डर ने पैसा नहीं दिया तो शेयर होल्डर विल पे यू। यस, सो प्लीज आज जल्दी करना ये एंट्रीज। नाउ व्हाट आर द एंट्रीज? शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट, शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट, ही इज योर डेटर टू इनकम, एंड व्हेन अमाउंट इज रिसीव्ड, यहां पे एक एंट्री रह गया, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर होल्डर टू कॉल्स इन एरियर्स, टू शेयर होल्डर बेटा इंटरेस्ट कंपोनेंट, एंड कॉल्स इन एरियर्स फेस वैल्यू का कंपोनेंट, प्रिंसिपल कंपोनेंट, लाइक प्रिंसिपल इंटरेस्ट, हियर फेस वैल्यू इंटरेस्ट। एंड बैंक में दोनों आएगा, इंटरेस्ट प्लस फेस वैल्यू। बैंक में दोनों पैसा वो देगा, फेस वैल्यू प्लस इंटरेस्ट। सी, शेयर होल्डर से आपने पैसा मांगा, शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट, शेयर होल्डर ने आपको पैसा दिया, बैंक टू शेयर होल्डर टू कॉल्स इन एरियर्स। Interest on calls in advance is expenditure, and shareholder is creditor. And shareholder account debit to bank, you have to just pay only interest. Face value इसमें नहीं आएगा, either no face value, no face value in case of calls in advance. Face value plus interest in calls in arrears, because you are receivable of not only interest but also face value. Here you already received face value, so you are concerned about only interest component. So shareholder becomes receiver to bank, creditors becomes receiver. So what is the entry? Interest to shareholders and shareholder to bank. Entries को याद कर लो, जल्दी जल्दी entries को याद कर लो. I know 10% 12% fix है. Yes. Now finish illustration number 9. Today's homework. Finish 10 illustration, and tomorrow I'm going to explain 9, and then we will start with 4 feature concept. Very important. I know अभी बहुत ज्यादा हो जाएगा, पर entries please 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 7 नंबर 8 नंबर पूरा complete करो, 9 नंबर का क्वेश्चन भी complete करो, 9 नंबर खुद से करो, you do by your own 9 नंबर. बेटा this is a CA course. Sometimes you might feel some questions are difficult one, but डोंट लूज होप्स. हम लोग बाकी बच्चों को ऑप्शन में रखने दो, हम लोग हमारे कंफर्ट लेवल से, सर हमेशा एक ही बात बोलते हैं, कंफर्ट लेवल से बाहर आना है बेटा. सुबह 5 बजने को मुझे उठने को नहीं होता, कंफर्ट लेवल से बाहर आएगा और उठेगा. ओके, ये हमें करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, कंसिस्टेंटली करनी पड़ेगी. ओके, डिसिप्लिन रखना पड़ेगा. हमें ये करना है तो करना है, ऑप्शन नहीं है इसमें. सीए करना है तो करना ही पड़ेगा. आप टफ कोर्स कर रहे हो,
सेल्फ डिसिप्लिन एंड कंसिस्टेंसी इज मोर इंपॉर्टेंट, इतना याद रखो। इलस्ट्रेशन नंबर 9 इज योर होमवर्क, इतना कंप्लीट करना। और कल मैं 9 नंबर आपको एक्सप्लेन करूंगा। एक बार ये एंट्रीज नोटबुक में लिख के रखना, 100 पेजेस के नोटबुक में ये एंट्रीज लिख के रखो, सो यू विल फाइंड इट वेरी इजी। कल हम लोग मिलेंगे इलस्ट्रेशन नंबर 9 के साथ। गुड बाय, टेक केयर एंड डू दी होमवर्क कंपल्सरीली। चलिए, थैंक यू।